Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So in today's video, we're gonna try Lapino's का international menu. मैं Zomato scroll करी थी जैसे लोग Instagram scroll करते हैं and I saw that Lapino's का एक international menu है. अब मुझे नहीं पता कि ये newly launched menu है या इसे थोड़ा time हो गया because मेरी इससे पहले इस menu पे कभी नज़र नहीं गई. But anyway, the minute I saw this, I was like, I need to try this international menu. So guys, I've ordered 7 items and I've only paid rupees 1100 and I think it's pretty reasonable. Okay, so before we dig in, let me tell you all this menu में क्या क्या है. So basically they've launched 3 flavors. One is Korean, of course, because everyone is obsessed with Korean food these days. The second flavor is Nashville and then we have Jamaican. So इन्होंने 3 flavors में बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं. Of course, सबसे पहले we have pizza, then we have taco, wings and we have rice and we also have quesadillas. So मैंने क्या किया, मैंने हर सेक्शन से I've ordered one flavor and मैंने एक और चीज़ करी है which is हाँ पिज़्ज़ा मैंने 2 ऑर्डर करे हैं. I've ordered Jamaican non-veg and I've also ordered Jamaican non-veg and I've ordered Korean veg pizza and हाँ they've also launched garlic bread. So इन्हीं 3 flavors में मैंने वो भी order करी है. So let me show you all the food. This is everything that I've ordered. I like the packaging. अच्छे से पैक करके दिया है. Safe and secured. So we have 2 pizzas here जैसे मैंने बताया था. Jamaican chicken pizza and then Korean veg pizza. Okay, I'm gonna start with the non-veg one. This is what it looks like. कैसा लग रहा है मैं भी देख लूँ. I've never had Jamaican food before, तो मुझे नहीं पता what to expect. मैंने as such research भी नहीं करा. But yeah, this looks nice. Of course, this chicken, this capsicum, and this corn. It also has pickles. Cheers. Oh, this is so nice. Oh, it's spicy. They've also added jalapenos. I just tried a piece of chicken and it's so juicy. Usually chicken pizza का जो chicken होता है ना, it's almost always extremely dry. This one is so juicy. And the sauce that they've used here, it's to die for. It's quite different from anything that I've ever had before, in the best way possible. And the sauce ka taste is similar to green chili sauce, like slightly similar. You gotta try this. If you wanna have like a spicy pizza, try this. And also I love the fact कि toppings में कोई कंजूसी नहीं करी गई है. भर के, and I mean भर के toppings है. Love it. Now this is the Korean veg pizza. Okay. इसकी sauce red है and it's oozing out. Okay, of course it has paneer, then onion, corns. I see red sauce. Good amount of sauce, you guys. Cheers. It does not taste like Korean hot sauce or gochujang or whatever. It's like a ketchup है. Yeah. Okay, the sauce that they've used here now, it's sweet and spicy red chili sauce. Like basically it tastes like ketchup may when you add red chili sauce, give it a good mix. That is what it tastes like. Not a fan of the sauce that they've used here. I don't know इसमें Korean क्या है. Does not taste bad, not at all. But Korean नहीं है ये कहीं से कहीं तक. It's okay, it's decent. मुझे Jamaican pizza Korean pizza से काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, no doubt. Moving on, let's try the garlic bread now. This is the mutton stuffed garlic bread with jalapenos and basically इसमें Nashville sauce है. They've also given a dip with it. जो उन्होंने मिक्स नहीं करा या 2 चीज़ें एक में डाल दी, I don't know. Can you see? 2 अलग अलग dips हैं इसमें. Anyway, let's try. सेंटर का पीस लेंगे बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा स्टफिंग होती है. I think I've taken like the best piece.
Yum. Okay, cheers. Oh my god. Love it. Mmm. Don't eat it with the sauce. So of course this part is empty. इसमें कुछ नहीं है. इसमें भी कुछ नहीं है. स्टफिंग सिर्फ बीच में है. सो 4 पीसेस में स्टफिंग है. फर्स्ट और लास्ट पीस में कोई स्टफिंग नहीं है. जो मटन कीमा की स्टफिंग है ना, इसमें बड़ी देसी तरीके से प्रिपेयर करी गई है, विच आई लव. एंड देन यू बाइट इनटू अ हालापिनो एंड यू गेट अ किक ऑफ spice and flavor, and it's just yum. Also, like, decent amount of stuffing. They've also added cheese. As someone who loves to eat mutton, I've never had mutton garlic bread, and this one is yum, you guys. It's like I'm eating keema pao. Let's try the Jamaican wings now. Wings तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है. Cheers. Did you see that? पूरा meat bone से. Ooh, the chicken is so juicy. Spicy but so delicious. These wings, you guys, are no joke. I have a runny nose. I'm sweating and my mouth is, it's not on fire, of course. They're not that spicy, but like there's a tingling sensation, which I'm liking, which I'm loving. But yeah, so ye sirf tabhi try karna if you're someone who loves spicy food like I do. And also, they're not just spicy, but so flavorful. Like, I want to eat them all. But I'm going to control myself because abhi काफ़ी कुछ है review करने के लिए. I think I need to do a spicy enough for me challenge with these wings because wow. Moving on, ये होगा cheesy chicken with Korean rice. So good amount of gravy and then we have rice. शुक्र है gravy बहुत कम नहीं दिया. Oh, it's so cheesy. Okay, I don't see a lot of pieces of chicken, but I see good amount of cheese and ठीक है, let's try. Cheers, you guys. चावलों में कोरियन क्या है? Let me just try that. Plain चावल है ये, बिल्कुल plain. There's absolutely nothing Korean about this meal, but that being said, this tastes so good. It's like eating butter chicken with rice, you know, or like chicken makhni with rice. See, shakal se bhi it looks like butter chicken, or like chicken makhni, or whatever you want to call it. So yeah, Korean isme kuch nahi hai. False advertisement, but it tastes delicious. It has like a lot of cream and cheese in it. But confession time, as delicious as it tastes, ये मैं order नहीं करूँगी because of the quantity. I'm okay with कि rice कम है, gravy तो उन्होंने इतनी कम नहीं दी. But what I'm not okay with is the fact कि इसमें literally 2 छोटे छोटे chicken के pieces थे जो मैंने खा लिए हैं. उसके अलावा there's no chicken. So it's not worth the money. It's too expensive. अगर किसी और outlet से you order like a bowl of, you know, वो combo meals आते हैं ना, उसमें भी they give you at least 3-4 छोटे छोटे pieces of chicken of this size. इसमें इतना chicken डाला हुआ था जो पता भी नहीं चला मैं कब खा गई. So yeah, that way it's not worth it. Otherwise it does taste good. Korean इसमें कुछ नहीं है.
So I'm someone who loves to eat tacos and मैंने लापिनो से taco order किया है. This is their Nashville chicken taco. मुझे ये वाले टाकोज नहीं पसंद. आई विल बी ऑनेस्ट. आई लाइक टाको बेल वाले टाकोज और लाइक बीरिया टाको, लाइक प्रॉपर टाको, यू नो. एंड सॉफ्ट शेल से ज़्यादा आई प्रेफर हार्ड शेल. ऑल्सो ऑफ टॉपिक बट टाको की बात हो ही रही है तो बता देती हूँ. इफ़ यू लव टाकोज डू ट्राई, एंड if you haven't already, do try Social के fish tacos. They are soft shell but so good. Like every single time I go to Social मैं वो order करती हूँ. Now this is the Nashville chicken taco. यार ये ना टाको नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है रोटी है, बट कोई बात नहीं. वो थोड़ा हार्ड हो गया है, जो ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट की गलती नहीं है, बट यार आई नो मुझे पहले दिखाना चाहिए था, बट आई एम सॉरी. वेरी फ्यू पीसेस ऑफ चिकन, लाइक कंजूसी से 4 छोटे छोटे पीस डाले हुए हैं. आई मीन जस्ट लुक एट द साइज. अगेन आई डोंट लाइक द सॉस दैट दे हैव यूज्ड हियर. ये वो कहने को तो ये नैशविल वाला है, बट इसका सॉस का टेस्ट कोरियन सॉस जैसा है. वही तो नहीं डाल के दे दिया. Okay. Not something I'll order again. Let's move on. This is the final box. ये है Jamaican jerk quesadilla and yeah. And yeah, guys, this is veg. Let's see what's inside. I see a lot of corn and paneer. Okay, I think मुझे ये भी पसंद नहीं आने वाला, but cheers, let's try. No. The sauce is so sweet, like too sweet. Nope. आज मैंने जितना भी सब कुछ ट्राई किया ना, उसमें से ये 2 आइटम्स मेरी लीस्ट फेवरेट हैं, बिकॉज ये मुझे ऐसे लग रहा है दोनों में उन्होंने कोई भी सॉस डाल दिया, बिकॉज बोथ द सॉसेज वर टू स्वीट. एंड ना जमेइकन पिज्ज़ा में स्वीट सॉस थी, एंड जो गार्लिक ब्रेड भी ट्राई करी थी उसमें नेचुरल सॉस थी, इवन दैट वाज नॉट स्वीट. तो इन दोनों में इतनी स्वीट सॉस क्यों डाली, वी हैव नो आइडिया. बिल्कुल पसंद नहीं आया, जस्ट नॉट वर्थ द मनी, सॉरी. एंड या गाइज, ये था लापिनोज के इंटरनेशनल मेन्यू का रिव्यू. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई एम फेयरली इम्प्रेस्ड. 7 में से 2 आइटम ना पसंद आना इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. देयर इज सो मच दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड, एंड ऑल्सो बहुत कुछ बचा है जो मैंने भी ट्राई नहीं भी किया है. इफ़ यू वांट आई कैन पोस्ट पार्ट 2, या फिर oh, that's Coco. And yeah, with this I'm gonna wrap today's video up. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Please like, share, comment, subscribe. सब कुछ कर दे. Wow, sorry about that. As I was saying, please like, share, comment, subscribe. सब कुछ कर देना. And I'll see you all next time. Till then, bye. Take care. Love you.